बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Viewers, welcome to Study Hub. Our today's topic is scrutiny of record for audit purpose. Viewers, आज का हमारा टॉपिक है स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस और इसमें जो है आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस में जो हमारे पास अवेलेबल क्वेश्चंस होंगे और उनके आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। सो आज की ये कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर होगा स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस पे होने जा रहा है। सो व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि अगर वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो जाती है तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है ताकि टॉपिक आप क्लियर कर सकें स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस। और इसके साथ एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि फ्यूचर से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। So without any further discussion, without any further delay, let's start our today's topic, which is scrutiny of record for audit purpose. So let's get started. Question number 1 है हमारे पास, analytical procedure are least likely to be used in the audit of। पहला क्वेश्चन है व्यूअर्स कि एनालिटिकल प्रोसीजर जो है आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज इन ऑडिट ऑफ। हमारे पास ऑप्शंस हैं, कैश बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिल रिसीवेबल्स हैं, डेटर्स हैं। जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो लीस्ट लाइकली टू बी यूज़ किया जाता है इन ऑडिट में कैश बैलेंस में व्यूअर्स। तो राइट आंसर इसका है कैश बैलेंस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे पास है, while verifying intangible assets, an auditor would have recomputed amortization charges and determine whether amortization period is reasonable. The auditor tries to establish dash by doing it. By doing valuation, existence, disclosure और position। सो व्यूअर्स राइट आंसर है इसमें हमारे पास वैल्यूएशन के वाइल वेरीफाइंग इंटेंजिबल एसेट्स एन ऑडिटर वुड हैव रिकम्प्यूटेड अमोर्टाइजेशन चार्जेस एंड डिटरमाइन वेदर द अमोर्टाइजेशन पीरियड इज रीजनेबल। तो ऑडिटर ट्राइज टू एस्टेब्लिश वैल्यूएशन बाय डूइंग इट। सो राइट आंसर इज वैल्यूएशन व्यूअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रिवेंट डबल पेमेंट ऑफ द सेम वाउचर। हमने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है प्रिवेंट करता है डबल पेमेंट ऑफ द सेम वाउचर की। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है विच इज़ अ पर्सन साइनिंग द चेक्स शुड कैंसिल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। नंबर सेकंड ऑप्शन हमारे पास है चेक्स शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 2 पर्सन्स। नंबर थर्ड है द डेटा ऑफ पेमेंट ऑफ वाउचर्स ऑफ सिमिलर नेचर शुड बी द सेम और क्लोज टू रीच अदर्स ऑल ऑफ अदर्स। तो राइट आंसर जो हमारे पास है व्यूअर्स दैट इज़ अ पर्सन साइनिंग द चेक्स शुड कैंसिल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। कि एक वाउचर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं तक उसकी डबल पेमेंट से कि जब एक शख्स जो साइन कर रहा है चेक को शुड कैंसिल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को वो कैंसिल करे। व्यूअर्स जो पर्सन साइन कर रहा है चेक्स को तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं डबल पेमेंट ऑफ सेम वाउचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्यूअर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर वाचिंग कैश सेल्स। कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट फॉर वाचिंग कैश सेल्स। सो हमारे पास है डेली कैश सेल समरी, सेल मैन समरी, मंथली स्टेटमेंट सेंड टू कस्टमर्स, बैंक स्टेटमेंट। सो व्यूअर्स राइट आंसर है हमारे पास इसमें विच इज़ मंथली स्टेटमेंट्स सेंड टू कस्टमर्स। जब डॉक्यूमेंट्स जो रेलिवेंट वाचिंग कैश सेल्स में होते हैं उनको नहीं देखा जाता, जो रेलिवेंट कंसीडर नहीं किए जाते, उसमें जो है मंथली स्टेटमेंट्स सेंड टू कस्टमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स हमारे पास, फॉर वॉचिंग ऑफ विच आइटम द ऑडिटर इज मोस्ट लाइकली टू एग्जामिन कॉस्ट रिकॉर्ड्स। कमीशन अर्नड, बैड डेट्स रिकॉर्डेड, credit sales, sales of scrap। So right answer is sale of scrap। For watching of which item the auditor is most likely to examine cost records। कि एडिटर जो है जब एग्जामिन करता है मोस्ट लाइकली कॉस्ट रिकॉर्ड्स को तो सेल ऑफ स्क्रैप जो है वियर्स राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास,
Which of the following is most crucial to a purchase department? Which of the following is most crucial to a purchase department? Reducing the cost of acquisition. Number B option has selecting supplies. C is authorizing the acquisition of goods. And number D is assuring the quality of goods. तो right option हमारे पास authorizing the acquisition of goods viewers. Which of the following is most crucial to परचेज डिपार्टमेंट? तो परचेज डिपार्टमेंट के लिए मोस्ट क्रूशल जो है अथॉराइजिंग द एक्विजिशन ऑफ गुड्स, जो गुड्स एक्वायर की गई हैं उनको अथॉराइज करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज vendors should be approved by management before purchase department executes an order. If this is not done, then which of the following situations may arise? Purchase could be made from vendors whose product quality may not be good. Purchase may be made from related parties without management's knowledge. Purchase could be made from vendors who may have offered price to vice president purchases. Any of these? So here's any of these is right answer है जब vendors should be approved by management before purchase of department executes an order. If this is not done, then which of the following situations may arise? Any of these situation may arise viewers is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. In case of sales return, the auditor should examine which documents? In case of sales return, the auditor should examine which documents? Credit notes, advice notes, and inward return notes. Debit notes, advice notes, and inward return notes. Purchase invoices, advice notes, and inward return notes. राइट आंसर है व्यूअर्स हमारे पास इसका क्रेडिट नोट्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड इनवर्ड रिटर्न नोट्स. ऑप्शन डी जो हमारे पास है क्रेडिट नोट्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड इनवर्ड नोट्स जो है राइट आंसर है. इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न द ऑडिटर शुड एग्जामिन द क्रेडिट नोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास व्यूअर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स would ensure that securities are not lost, stolen, or diverted? Which of the following controls would ensure viewers? Establish physical barriers over investment securities, maintain files of authorized signatures, segregate investment approval from accounting and from custody of securities. All of the above. Viewers right answer है all of the above. Which of the following controls would ensure the securities are not lost? All कंट्रोल्स व्यूअर्स जो हैं इंश्योर करते हैं कि सिक्योरिटीज़ जो हैं न लॉस्ट हों, स्टोलन और उनको डाइवर्ट ना किए जाए. तो ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शंस हैं वो व्यूअर्स इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स इज लीस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू लैंड, फ्री होल्ड लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मोटर व्हीकल? सो ये राइट आंसर है हमारे पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑडिटर हैज़ नोटिस्ड एग्जिस्टेंस ऑफ recurring losses sales of fixed assets. This indicates राइट आंसर हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्जेस और इनसफिशेंट. इसमें भी है जो हमारे पास राइट आंसर है इस क्वेश्चन में विच इज़ डेप्रिसिएशन चार्जेस और इनसफिशेंट, जो कि ऑप्शन ए है हमारे पास. नेक्स्ट जो ऑप्शंस हैं हमारे पास, पॉलिसी ऑफ सेल और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नीड्स टू बी रिव्यूड. The sale of assets has not been properly authorized. And next is accounting errors. So right answer है हमारे पास depreciation charges are insufficient. Next question है हमारे पास viewers, an auditor is verifying valuation of building which has been self-constructed by the client. Which of the following documents is least relevant to the auditor for verification purpose? Bills of contractor, minutes of meeting of board of directors, certificates of engineer and architect,
लोन एग्रीमेंट। सो ये राइट आंसर है हमारे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हेन एन ऑडिटर इज वेरीफाइंग valuation of building which has been self constructed by the client. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन ऑर्डर टू वॉच बॉट लेजर द ऑडिटर obtain confirmations from creditors. The principal reason for the auditor to examine suppliers' statements at balance sheet date is to obtain evidence that the supplier exists. There are no unrecorded liabilities. Recorded purchases actually occurred to link creditors with cash book entries. So ये इसमें जो हमारे पास right answer है that is there are no unrecorded liabilities. Next question है हमारे पास the creditors accounts generally have credit balance. Debit balance may be due to advance paid against an order, goods returned, wrong debit to supplier account, any of these viewers any of these जो है right answer है इस question में हमारे पास. Next question है an auditor conducts a surprise check on the pay day, that is the day wages and salaries are paid. The primary purpose of this audit procedure is, so इसमें जो right answer है that is to test procedures for distributing pay checks. Next question है हमारे पास in case of vouching the auditor is least likely to examine authorization by appropriate authority in case of, so इसमें हमारे पास right answer जो है in case of discount allowed to customer as per organizational policy. So in case of vouching the auditor is least likely to examine authorization by appropriate authority in case of bad debts, written off, sale returns, purchase returns, but right answer is discount allowed to customers as per organizational policy. Next question है हमारे पास which of the following statements is not true with regard to teaming and leading. So पहली स्टेटमेंट है हमारे पास इट रिजल्ट्स इन द डेलिब्रेट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश रिसीट्स. इट इज एसोसिएटेड विद कैश रिसीट्स if same individual maintains cash receipts and cash payments. Teaming and leading is likely to exist. ये हमारे पास right option है इसका. To conceal the shortage, the fraud usually tries to keep bank and book amounts in daily agreement so that a bank reconciliation will not detect the irregularity. So right answer है इसमें हमारे पास viewers if same individual maintains cash receipts and cash payments, teaming and lending is likely to exist. Next question है the auditor should examine subsequent realization of revenue such as dividends, interest, commission, etc. to identify cases of unrecorded revenue. Where's right answer है हमारे पास option number A which is identify cases of unrecorded revenue. The auditor should examine subsequent realization of revenue such as dividends, interest, commissions to identify cases of unrecorded revenue. Next question है हमारे पास viewers the auditor is most likely to examine related party transactions very carefully while vouching credit sales, sales return, credit purchases, cash purchases. So right answer हमारे पास credit purchases viewers. The auditor most likely to examine related party transactions very carefully while watching credit purchases को watch करते हुए जो है auditor most likely to examine related party transactions. Right answer हमारे पास credit purchases viewers. Next question हमारे पास inspection report receiving reports puts entries in sales book and sales return book, purchase book and sales return book, cash book and purchase book, sales book and purchase return books. Right answer हमारे पास इस क्वेश्चन में purchase book and sales return book.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. The auditor can rely on a certificate issued by an authorized valuation as to the valuation of assets in the balance sheet. Number C है, the auditor should value the assets as per generally accepted accounting principles. Valuation is not part of auditor's duties. So right answer है viewers हमारे पास इस statement जो true नहीं है, the auditor should value the asset as per generally accepted accounting principles. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास viewers, an internal auditor discovered that fictitious purchases have been recorded by the purchase clerk. This indicates absence of which control? Purchase invoices are independently matched with purchase orders and goods received notes. Goods received notes requires the signature of individual who authorized the purchase. Routine checks are performed by internal auditor fortnightly. Purchase function and production function are clubbed in one department. Viewers, the right answer is option number D. Purchase function and production function are clubbed in one department. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स आर लीस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू लियन. विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स भी हमने बताने हैं. फ्री होल्ड एंड लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी है. सो राइट आंसर है हमारे पास लीज होल्ड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाइल वाउचिंग, how will the auditor ensure himself that all credit sales transactions have been recorded by the entity? Option number A, examining cutoff points. Option number B, matching entries in the sales book against renumbered sales invoices and goods outward notes, counting the number of invoices and matching the number with एंट्रीज ऑन सेल्स बुक. और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी. सो राइट आंसर है इसमें हमारे पास व्यूअर्स बोथ ए एंड बी जो है एग्जामिनिंग कट ऑफ पॉइंट्स, और बी जो है मैचिंग एंट्रीज इन द सेल्स बुक अगेंस्ट रीनंबर्ड सेल्स इनवॉइसेस एंड गुड्स आउटवर्ड नोट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रिवेंट डबल पेमेंट ऑफ द सेम वाउचर. सो इसमें राइट आंसर है हमारे पास, द पर्सन साइनिंग द चेक शुड कैंसिल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाइल वॉचिंग हाउ विल द ऑडिटर इंश्योर हिम दैट ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड बाय द एंटाइटी. अगेन जो है ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसमें बोथ ए एंड बी आंसर है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स account has revealed possibility of unrecorded sale of plant and machinery. Which of the following audit procedure may be adopted to discover it? So here's examination of property tax files, inquiry of plant manager, examination of debits to accumulated depreciation. All of the above. So right answer है option number D, all of the above. Where's इसमें जो है हमारे पास right answer है. An analysis of fixed assets account has revealed possibility of unrecorded sale of plant and machinery. Next question है हमारे पास viewers, which of the following is not true with regard to verification of assets. So इसमें हमारे पास जो it invoices substantiation of occurrence of transactions. Its objective is to establish existence, ownership, position, valuation and disclosure of assets. The auditor has to form an opinion on different aspects. All are true. So right answer है हमारे पास option number A, which is it invoices substantiation of occurrence of transactions. Next question है हमारे पास, which is the auditor while verifying prepaid insurance has concluded that there is inadequate insurance of building he should. So इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वियर्स, उसमें
जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है विच इज़ मॉडिफाई हिज ऑडिट रिपोर्ट, सेकंड ऑप्शन इज इंसिस्ट इट should be disclosed in the notes to financial statements. ऑप्शन नंबर सी है राइट इन लेटर ऑफ वीकनेस. सो बोथ ए एंड सी जो है इसके राइट आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के व्यूअर्स. सो ये था हमारा क्वेश्चन तो था ऑडिटर वाइल वेरीफाइंग प्रीपेड इंश्योरेंस. नेक्स्ट हमारे पास जो व्यूअर्स क्वेश्चन है to test whether sales have been recorded, the auditor should draw a sample from a file of sales invoices. इसका जो right answer है viewers के जब to test whether sales have been recorded जब auditor ने देखना होता है तो purchase orders को sale orders को bill of loading को नहीं, जबकि right answer जो है हमारा इस sales invoices जो है इसमें right answer है इस question में. Next viewers हमारे पास जो है question the guidance notes on revenue issued by the ICAI does not deal with revenue from sale of fixed assets. इसमें right ऑप्शन है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर लीस्ट लाइकली टू बी यूज इन द ऑडिट ऑफ कैश बैलेंस में वियर जो है लीस्ट लाइकली टू बी यूज होता है एनालिटिकल प्रोसीजर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हेन काउंटिंग कैश ऑन हैंड द ऑडिटर शुड ensure postage and revenue stamps are not counted in physical count. because इसमें जो right answer है हमारे पास which is auditor should ensure postage and revenue stamps are not counted in physical count. next question हमारे पास in case of unclaimed wages the auditor should examine whether the amount has been deposited in a separate bank account. whereas इन केस ऑफ अनक्लेम्ड वेजेस जो हैं द ऑडिटर शुड एग्जामिन जो को वो करेगा स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पज में द अमाउंट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हेन ऑडिटिंग प्रीपेड इंश्योरेंस एन ऑडिटर discovers that the insurance policy bond on building is not available for inspection, this may indicate लियन ऑन बिल्डिंग वियर्स. जो राइट आंसर है इसमें हमारे पास विच इज लियन ऑन बिल्डिंग वियर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स assertions are addressed by testing the cut off for plant asset addiction, existence and ownership, valuation and disclosure, position and ownership, completeness and valuation. The right answer है इस क्वेश्चन में हमारे पास viewers which is completeness and valuation. नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं व्यूअर्स के हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स assertions are addressed by testing the cutoff of plant asset addiction, completeness and valuation. अगेन रिपीट हो रहा है हमारे पास ये. और इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न द ऑडिटर शुड एग्जामिन विच डॉक्यूमेंट्स क्रेडिट नोट्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट एंड इनवर्ड रिटर्न जो है इसमें हमारे पास राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स हमारे पास द ऑडिटर हैज़ नोटिस्ड existence of recurring losses sales of fixed assets that indicates depreciation charges are insufficient. so ये हमारे पास इसमें जो right answer है viewers के the auditor has noticed existence of recurring losses sales of fixed asset. this indicates that depreciation charges are insufficient, which is option number A. that is right answer. नेक्स्ट हमारे पास द बैलेंस ऑफ कैश इन often between 1 to 5% of total assets. Take the most appropriate statement with regard to verification of cash in context of this. Cash in always material as materiality is qualitative concept. Here's right option है option A हमारे पास cash in always material as materiality is qualitative concept. so next question है हमारे पास viewers in order to watch which of the expenses the auditor will examine bill of entry.
सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास कस्टम, ऑप्शन नंबर बी है एक्साइज ड्यूटीज़, ऑप्शन सी है सेल्स टैक्स, ऑप्शन डी है हमारे पास इनकम टैक्स। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए विच इज़ custom. In order to watch which of the expenses the auditor will examine bill of entry. In order to watch, the auditor will examine custom bill of entry viewers. So next question हमारे पास, while observing a client's annual physical inventory, an auditor conducted test counts for certain test counts were higher than the recorded quantities in the client's perpetual record. This situation could be the result of the client's failure to record. Here's right option हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर बी विच इज़ सेल्स रिटर्न्स जो है ऑप्शन हमारे पास इसमें आता है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्यूअर्स, while watching wages, auditor should examine whether there is proper segregation of duties. Which of the following activities should not be done by same department? So ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास राइट आंसर है, proposing payroll summary and disbursement of wages। इसमें राइट आंसर है हमारे पास while watching wages, auditor should examine whether there is proper segregation of duties. Which of the following, इसमें ऑप्शन नंबर बी है, proposing payroll summary and disbursement of wages। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यूअर्स हमारे पास, which of the following statement is not true regard to auditor's attendance at stock taking? ऑप्शन ए हमारे पास, auditor should attend physical stock taking only if inventory is material। ऑप्शन बी है, ऑडिटर मे नॉट अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक बाय मैनेजमेंट इफ ही डज नॉट फाइंड इट अप्रोप्रिएट टू रिलाई ऑन इट। ऑप्शन नंबर सी है, इफ इन्वेंट्री इज मटेरियल even when the auditor is not placing reliance on the physical verification by the management, he should attend it। option number D है, the primary objective of an auditor's observation of an entity's stock take it to obtain direct knowledge that the stock and has been property counted। so here's right आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी which is if inventory is material even when the auditor is not placing reliance on the physical verification by the management, he should attend। if जो है auditor statement is not true regard to auditor's attendance at stock taking, जो ये हमारे पास statement है if inventory is material viewers, इसमें जो है right आंसर है हमारे पास। सो वियर्स ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जो थे रिलेटेड टू द टॉपिक स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड फॉर ऑडिट पर्पस के ऊपर। उसमें जो है हमने ये प्रिपेयर किया इस टॉपिक को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए होपफुली फ्रूटफुल बेनिफिट रहेगी, आप इससे जो है फ़ायदा लेंगे इन क्वेश्चन से। और किसी भी एग्ज़ाम में जो है आइदर वो ऑडिट के रिलेटेड एग्ज़ाम है, अकाउंट्स का एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है, तो इसमें जो है आपको ये तमाम क्वेश्चंस फ्रूटफुल रहेंगे आपके लिए। इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ कि चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि फ्यूचर में जितने भी और हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड हम वीडियोज़ बनाएंगे वो टाइमली आप तक पहुँच सकें। और हमारी ये कोशिश होगी कि ऑडिट से रिलेटेड तमाम ऑडिट सब्जेक्ट्स को कवर किया जाए और उसके बाद जो है अकाउंट्स, फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके साथ जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स की फ़ील्ड के, अकाउंट्स की फ़ील्ड के, ऑडिट की फील्ड्स के, उनके जो लेक्चर्स हैं उनको कवर करके इसी चैनल पर आपके साथ शेयर किए जाए ताकि व्यूअर्स आप उनसे फ़ायदा ले सकें। सो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको तमाम अकाउंट्स की, ऑडिट की, फाइनेंस की, मैनेजमेंट की तमाम वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है
ताकि तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।